Okay. So hello everyone. Welcome to this session. General Studies UPSC Mains 2021 is the overall heading, but we are discussing strategy for prelims and mains, and I'll also be discussing the questions which has been asked in the test series. Okay, you might have attended the test series, so you might have felt some of the questions easier, some of them were difficult. So I'll be taking up the questions related to environment and science and technology. Okay, so before going into the questions, I'll also be discussing the strategy for prelims and mains. So are you comfortable in English or like मैं हिंदी में mix बात करूं? Bilingual, sir. Bilingual, right? Yes. Okay, so initially, like as you guys are, some of you are writing mains this time, some of you want to know the strategy for prelims and mains. I'll be initially giving the strategy for prelims as well as mains for both environment, ecology, biodiversity and disaster management, and then I'll be giving it for science and technology. So first and foremost thing is the approach for environment, ecology, biodiversity and disaster management. सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं किसी भी प्रिपरेशन करने से पहले कि हम लोग सारी इकट्ठा एक सब्जेक्ट समझते हैं. Okay, we'll always try to see it as one whole part. हम इसको एक साथ टारगेट करते हैं. आप कोई भी बुक उठा ले, उस बुक में आपको पूरा ऐसे मतलब सिलेबस दिया रहेगा जहां पे आपको एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद तुरंत इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, फिर एनवायरनमेंट का रहेगा, फिर एक कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का आएगा और बीच में कहीं बायोडाइवर्सिटी का रहेगा. तो आपको प्रॉपर डीप बाइफर्केशन नहीं मिलेगा सारे एक सब्जेक्ट का. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन, आइदर इट बी प्रीलिम्स और फॉर मेंस, आइदर फॉर पीपल हु आर राइटिंग दिस मेंस, ओके, उनके लिए तो इसमें से मेन जो टॉपिक में लिखने जा रहा हूं वही चूज करना है. पर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, उन लोगों को सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि इसको सेपरेट करो. ओके, सो दीज 4 आर इंडिविजुअल यूनिट्स. एक बहुत बड़ा सेक्शन एनवायरमेंट साइंसेस का 4 अलग अलग यूनिट है. आप ऐसा करते हो कि पहले एनवायरमेंट, फिर इकोलॉजी, फिर बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट. कुछ लोग ये बिल्कुल नहीं पढ़ते एनवायरनमेंट के अंडर, and they don't even know that there is something called as disaster management under environment as well. So geography के अंदर disaster management तो है ही. Okay, you will always be studying a lot of things in disaster. There will be studying what is disaster, what are the types of disaster, crisis क्या है, hazards क्या है, like earthquakes, tsunamis, उसका causes क्या क्या epicenters है, और वो जो पूरा एरियाज है जहां ये सब कॉन्सेंट्रेटेड है के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. तो वो सब चीजें आर द बेसिक्स, लाइक दोस आर द डिजास्टर्स. पर ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर डिजास्टर विल स्पिल ओवर टू एनवायरनमेंट पार्ट जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट. वो आपको इधर ही पढ़ना चाहिए. ओके, सो अ वेरी स्मॉल portion left over which you will not be studying in geography, वो डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर आने के बाद आप क्या क्या करोगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्या क्या रेगुलेशंस है, और क्या क्या इंटरनेशनल मीटिंग्स हुआ है इसको लेके, सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुआ है इसको लेके. ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट. वो भी इधर ही आता है. सो दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 4 थिंग्स. और इसके अंदर लाइक व्हेन यू स्टडी दिस इंडिविजुअली, इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक्स आता है. ओके, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग टॉपिक्स आता है, अलग अलग चीजें आता है. सो आप सेपरेट ही रखो. ओके, ताकि आपको मेन थिंग ये है, आप जो पढ़ते हो उसको आप याद कर पाओगे. ओके, द मेन थिंग इज टू रिमेंबर वॉट एवर यू रीड, एंड इन ऑर्डर टू रिमेंबर वॉट एवर यू नीड टू हैव अ फ्लो. ओके, ये जो एक फ्लो रहेगा ना, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा, हर एक चीज लिंक्ड है.
अगर आप उस लिंक के साथ याद रखोगे तो इट्स अ वेरी वेरी ओके somebody is in okay so it is very very easier subject बहुत सारा आपको फ्लो मिल जाएगा और भूलेंगे नहीं राइट सो सबसे पहले मैं एनवायरनमेंट का बात करता हूं सिर्फ एनवायरनमेंट सो हेलो विकास वी हैव जस्ट स्टार्टेड ओके इससे पहले वाला जो भी था प्लीज रिकॉर्डिंग में देख लो सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट्स बीन अराउंड 5 to 6 minutes that's it okay 5 मिनट ही हुआ है so environment के अंदर the thing is you have to split the entire topic into 3 things okay so Vikas are you writing this time are you writing the exam this time Yes sir. Okay this time you are an aspirant for 2021 mains right 2020 sir mains. 2020 mains okay yeah so which is in 2021 January Okay yes sir. yeah Right. yeah so anyways because I have just started to give you the strategy of how to approach environment ecology and biodiversity and later on the science and technology and then I'll be going to discuss the questions right Please sir please. okay Go ahead sir. so yeah so under environment there are mainly 3 parts right so there are some basic concepts right so then there is a huge section of environment legislation and environment in news. So these are the 3 main headings in which environment has to be approached. So under basic concepts, you will be initially studying the components of environment. What are the different components? Biotic components, abiotic components, social components. So just general introduction, usko pada to bhi chalega, nahi pada to bhi chalega. It's like, basic science. So uske baad directly you will jump into the problems and solutions. Okay. So the problems and solutions related to environment. इसके अंदर क्या क्या आएगा? Under these problems and solutions, so you will be targeting different problems related to environment. क्या क्या problem है? क्या क्या आप encounter करते हो? So सबसे पहले pollution, right? So pollution के अंदर आप air pollution, water pollution, noise pollution, radioactive pollution, solid waste pollution, right? So thermal pollution, so even sound pollution and light pollution is also there. ये नया concepts है. Light pollution, and visual pollution. Okay, so these 2 are the new concept which has been added to the pollution thing. So काफी उस पे research होना बाकी है पर बहुत सारा चीज आ चुके हैं. There are literatures on that. तो ये सब चीजें आप pollution जब deal करते हो generally क्या होता है कि ये आप छोड़ देते हो. Okay, you will not study pollution. Okay, you will leave it as it is. तो 2019 prelims में 2018 prelims में लगभग 3 क्वेश्चन आए थे. There were 3 questions just from 4 questions just from pollution. Okay, solid waste management से आया था, e-waste से आया था. Okay, so there were questions which are coming from pollution, right? तो अगर prelims में आप पूछ रहे हैं तो mains में बिल्कुल पूछ सकते हैं. So please be aware of pollution. It's a very important topic. आप लोग छोड़ देते हो कि मुझे air pollution में सीखना क्या है. Air pollution तो जानते हैं हम, vehicles, factories, ये सबसे जाता है. So there are a couple of pollutants which we will study and you can remember. But आपको उसमें थोड़ा deep जाना होगा. Okay, pollution में, because these are the areas which they are concentrating. Just like the questions come from NCERTs in environment, the questions do come from pollution, right? So when you start studying pollution, at least, just for example, if I give air pollution में आपको pollutants जानना है. What are the different pollutants? हर एक चीज like sulfur dioxide, उसका source क्या है, कहाँ से आता है, and what are the effects, क्या क्या impact करता है, what will be the impact on human beings, what will be the impact of animals, impact on environment as a whole, impact on microorganisms. So ऐसे ही मतलब एक एक करके आपको पढ़ना है because यही से क्वेश्चन आता है.
they'll ask which is the source of sulfur dioxide, right? उसके बाद nitrous oxide है, carbon monoxide, carbon dioxide, particulate matters, right? So aerosols बोलते हैं, वो कहाँ है, कौन सा sources है, कौन सा impacts है. So वो सब चीजें pollution में आता है, air pollution में. और उसके बाद what are the initiatives? How do you control it? How do you control the air pollution? What are the things we can do? Okay, in general, what are the initiatives of the government? Government क्या किया है? National Air Quality Index है, या फिर they have started Water Pollution Act and Air Pollution Act. ये सब चीजें, these are the different strategies given by the government. Government की तरफ से air pollution रोकने के लिए ये चीज हुआ है. Okay, so that is how when the air pollution ends. और उसके related जो भी है नए चीज आए, जैसे कि दिल्ली में alternate numbers आ गया, alternate vehicle numbers. That is one of the initiative by the state government. वो क्यों? air pollution control करने के लिए. So there are mist sprayers. So we'll be going for what is it called, anti-smog gun. नया अभी दिल्ली में है, तो आपको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड एंटी स्मॉग गन. तो आप उसको पानी को स्प्रे करते हो so that the smog will subside. Okay, so all these things are the initiatives by the government. उसके साथ खत्म होगा. ऐसे ही आपको वाटर पोल्यूशन के साथ करना है, जिसमें आपको पूरा जितने भी पोल्यूटेंट्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज में आता है, या whatever the things which go as a water pollutant, from household, bioremediation, eutrophication, वो सब चीजें पढ़ना है. What are the sources? What are the effects? Okay, what we are doing, हम लोग क्या क्या उसके लिए कर रहे हैं कंट्रोल के लिए. So that is how all the pollutions has to be individually read, both for prelims and mains, right? उसके बाद होगा आपका deforestation. डिफॉरेस्टेशन का कॉजेस क्या है, उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ोगे, उसमें एनक्रोचमेंट पढ़ोगे, उसमें different kinds of illicit felling पढ़ोगे. So what are the solutions? What are the effects? And what are the problems? What do we have to stop that? ऐसे पूरा जितने भी problems and solutions है, so जैसे कि forest fires हो गया, right? So then you are having wildlife. So जिसमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसमें इस बार आपको एक क्वेश्चन भी था ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में. सो ऑपरेशन कुर्मा, और उसके बाद हाउ डू यू मिटिगेट द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. सो डिफॉरेस्टेशन के अंदर देयर यू विल सी व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. उसमें आप सॉइल एरोजन करोगे, उसका सोल्यूशन में आप वाटरशेड मैनेजमेंट पढ़ोगे. So in 2019 prelims, you had this question. There was a question on watershed management. Okay, there was a question, key integrated watershed management concept kya hai? Why is it there? What is the main thing? How do you control it? So under wildlife, man-animal conflict, wildlife projects, alag-alag projects hai. You have Project Tiger, you have Project Elephant, you have lion conservation, cheetah reintroduction, or leopard conservation, right? So conservation of dolphins, conservation of gharials, ये सब vultures, ये सब projects individually आपको पढ़ना है wildlife के अंदर, because that is a problem. Wildlife conservation is a problem. So then you have climate change. Climate change is a problem. It's an environmental problem. Okay, we are facing. क्यों हो रहा है? Why climate change is happening? Because of the anthropogenic activities. उसमें causes क्या क्या है? What are the pollutants? What causes climate change? Greenhouse effect, global warming, उसका reasons. उसके बाद आपको पढ़ना है what are the global initiatives to control this. क्या क्या हो रहा है? In that you will be studying the global initiatives in terms of UNFCCC, right? United Nations Framework Conservation for Climate Change. उसका पूरा COPs जो अभी तक हुआ है 1991 से 1995 से, सो ये 1992 का अर्थ समिट इधर ही पढ़ोगे. उसके बाद जितना भी COPs हुआ है हर साल हो रहा है. ओके, सो उसका अपडेट, सो लेटेस्ट 2 COPs का अपडेट्स आपको लिख के रखना है. ओके, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आता है. क्योटो प्रोटोकॉल में अलग अलग मैकेनिज्म्स, वहां से बहुत सारा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका है. ओके, so after climate change you will be studying acid rain,
Okay, so and ocean acidification. Then इसका reasons क्या है? What are the different gases which are responsible for acid rain? उसका impacts क्या है? उसको कैसे control कर सकते हैं? Right? So फिर आप देखेंगे ozone depletion. What is the role of UV? कितने तरह का UV होता है? Okay, what is ozone? What is the ozone formation cycle, ozone depletion cycle, ozone hole formation? ये mains के लिए बहुत important question है. What are the what is happening with ozone hole? Why ozone hole is formed? उसके बाद आप उसका initiatives, again global initiatives in terms of Montreal Protocol. इस बार आया था ना, Montreal Protocol is a protocol started for controlling the damage of ozone to stop the ozone depleting substance. We call it as ODS. Okay, so those ozone depleting substances should be stopped. इसीलिए 1989 में ये action पे आया था Montreal Protocol, and that is like being amended several times. And the latest amendment जो है वो Kigali Agreement है. So पहले ये था कि you should stop all the chlorofluorocarbons. So CFCs has to be replaced with HFCs, hydrofluorocarbons, क्योंकि chlorine is the culprit. पर ये हुआ कि HFCs, even though they are not causing ozone depletion, they will be causing the climate change. They are big greenhouse gases. Okay, इसको भी replace करने के लिए हमने 2016 में एक amendment किया Montreal Protocol में, जिसको हम Kigali Agreement बोलते हैं. That was also one of the question. Okay, इस बार का test series में, if you have written the test series. उसके बाद एसिड रेन के बाद ओजोन डिप्लीशन हो गया. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो यहाँ पे आप बात करोगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितना है, 17 इंडिविजुअली क्या क्या बात करते हैं, द नंबर्स. ओके, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग दिस टाइम, व्हेनेवर एन एनवायरमेंट क्वेश्चन कम्स, यू शुड एक्चुअली स्टार्ट्स विद व्हाट इज द in which of the sustainable development goals this is there, right? SDG 13, 14, 15, sir, primarily 3. Exactly. आप mention करके you should be starting with that. You should be starting, this is an initiative or this is a policy which comes under the major aspect of sustainable development goal 13, okay, or 14. So depending on whether it is the water, within the water, or on the land, or whatever it is, right? So sustainable development में what are the reasons why there is over exploitation of resources? क्यों बहुत सारा ओवर पॉपुलेशन हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. सो दैट्स व्हाई रिसोर्सेस आर डिप्लीटिंग. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नीडेड, हाउ इट स्टार्टेड. सो ओके, उसका बिगिनिंग से लेके till the sustainable development goals, including all the things like Agenda 21 and all. So all these things we'll be talking here. Okay, so that completes your problems and solutions. इतना overall आप इस बार पढ़ भी लियो विकास, तो make sure that these highlight points you will refer again. Okay, इतना तो आप करके ही जाओ. So definitely few topics will come in the mains examination. अगले बार prelims में बहुत सारा topics इससे आता है. A lot of questions do come from that. So coming to environmental legislation, here make it as two divisions. One is policies and acts. Environmental policies, environmental acts. Environmental policies में तीन आता है. Okay, so national forest policy, we call it as NFP, national forest policy 1894, 1952, 1988 और अभी 2018. Okay, so 2018 सिर्फ ड्राफ्ट है, इसलिए मैं चार नहीं बोला, तीन ही बोला. We are still following the national forest policy guidelines given in 1988. 1988 में जो भी गाइडलाइंस हुआ था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो 84 में पहला आया था, 52 में वो रिप्लेस कर दिया, 52 वाला 94 को रिप्लेस कर दिया, देन 88 वाला 52 को रिप्लेस कर दिया. बट स्टिल व्हाई आई एम सेइंग, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये चारों पढ़ के जाओ, क्योंकि देयर कुड बी क्वेश्चंस लाइक दिस इसके ऊपर. Okay, what are the demerits of National Forest Policy 1894 and 1952, which has led to the formation of National Forest Policy 1988, right? तो वो एक क्वेश्चन हो सकता है. 1988 का demerit कभी नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें है ही नहीं. Okay, there is no demerit of the National Forest Policy 1988.
राइट. और ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988. इवन दो इट इज 1988, फिर भी पूछ सकते हैं क्योंकि दैट इज व्हाट इज स्टिल फॉलोड. हम अभी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, राइट. और ये कर सकते हैं कि व्हाट इज द न्यू इन द न्यू फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 ड्राफ्ट which was recently released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, right? So ये 3-4 क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो इसलिए आपको चारों का salient features, उसका क्या हुआ, उसका ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस पढ़ के जाना चाहिए. ये 3 पॉलिसीज आपको पढ़ना ही है एज ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन. आजकल बहुत सारा क्वेश्चंस एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन से पूछ रहा है, राइट. सो एक्ट्स में आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए Indian Forest Act 1927. Okay, so मैं इस बार इसका एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं क्योंकि was there in news, सुधा और विकास, आप कुछ जानते हो क्या हुआ था अब 1-2 साल में इसके बारे में कुछ न्यूज़ था? Do you remember anything? Regarding the definition of deemed forest, something regarding that. Yeah, definition, they have tried to give the definition of the forest. Basically, one of the drawback of this Indian Forest Act 1927 is it doesn't define the forest, but still it will actually demarcate the forest into reserved forest. एक बार किसी भी forest, irrespective of its vegetational status, उसमें पेड़ है कि नहीं है मतलब नहीं है. एक बार एक लैंड को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो दैट एरिया बिकम्स अ रिजर्व फॉरेस्ट. उसमें आना जाना सबका रिस्ट्रिक्टेड. यू कैन नॉट ब्रिंग इन एनीथिंग, यू कैन नॉट गो इनसाइड, यू कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग. और टिम्बर पे टैक्स लग जाएगा. दैट वाज अ ब्रिटिश डिजायर, दैट वाज अ ब्रिटिश थिंग दैट की दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट मनी इवन फ्रॉम द फॉरेस्ट. इसलिए वो लोग आए. पर अभी भी जो भी फॉरेस्ट में क्राइम्स होता है, so most of them are punished under Indian Forest Act 1927. इसको आप पूरा पढ़ लो, कितना चैप्टर्स है, क्या सेक्शंस है और क्या क्या किस किस के बारे में बात करता है, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट. उसके बारे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच यू शुड स्टडी इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. Rachel Green. Okay, that was nice. Who was it? Some random person. Okay, so random person has also got the link to this. Okay, good. Hope he comes again. It will be a good relaxation. Sorry, actually my Zoom was not switching on. That's why till then. Okay, so I think hopefully he's the right one. There is one more admissions. Yes, sir. Okay. Okay. Hello. I think it's Devendra. Devendra, are you there? Yes, sir. Okay. Yeah. Good. So yeah, Devendra, I was just giving out the strategy, right? So Wildlife Protection Act definitely must read. 2 questions in prelims. 1 or 2 questions will definitely come in prelims. Okay. So there'll be they have asked it like even in the schedules. अगर ये animal schedule 1 में है तो ये किस में है, right? So which does comes under the acts or policies. उसमें भी एक क्वेश्चन आया था प्रोटेक्शन एक्ट का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. उसमें शेड्यूल्स आता है, उसमें अलग अलग चैप्टर्स आता है, उसमें ऑल दीज नेशनल पार्क्स विल बी स्टडी वेल स्टडीइंग WPA. तभी एक नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को खत्म कर लो. ओके, डोंट वेट टू स्टडी इट इन अ सेपरेट वे. आप चैप्टर 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप करी, देयर विल बी अ मेजर chapter called as protected area network, PAN. PAN is the 3rd chapter of Wildlife Protection Act. It completely talks about just protected area networks. उसमें national parks है, sanctuaries है, conservation reserves और community reserves, 4 तरह का है. So उसमें आप national parks पढ़ लो, उसका characters क्या है, कैसे establish करते हैं, कौन करते हैं, कितना इंडिया में है, कौन कौन से स्टेट में है, आप इसी के अंडर खत्म कर दो and that will be done. That will be a done topic. आप साइड में रख दो, बाद में अलग से नहीं पूछ सकते क्योंकि बहुत सारा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज से आ रहा है आजकल. Okay, there will be a definite question. So once you are done with Wildlife Protection Act, then go to Forest Rights Act 1980. ये एक छोटा सा एक्ट है. Okay, so earlier I forgot, why Indian Forest Act 1927 was in news, because because the bamboo, okay, bamboo under this act is considered as a tree. उसको timber माना जाता था.
तो इसीलिए whenever you cut a bamboo, it is equally seen as you have cut a tree. Botanically speaking, bamboo is a grass, right? Bamboo एक grass है, फिर भी उसको tree के category में डाल दिया था, and people were not able to, grow bamboo and take out bamboo, because bamboo is one of the most used forest product, minor forest product in India. उसको ये किया था. Now we have amended, and for the forests which are outside the recorded forest, उसके बाहर जो भी है उसको आपने बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है. नाउ इट इज नॉट इक्वल टू कटिंग ए ट्री इफ यू कैरी बैम्बू. सो बिकॉज लॉट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर अलाउड. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये आजकल माइनिंग चल रहा है ना, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन माइनिंग. ओके, सो इसमें आप पूरा माइनिंग का पढ़ोगे, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट mining activities कैसे करते हैं, and how it affects, so how it can be transferred, for a forest land can be transferred for non-forestry purposes. So all these things comes under Forest Rights Act. उसके बाद आप पढ़ोगे very very important Environment Protection Act 1986, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बाद आया था. Okay, in this you will be studying something called Environment Impact Assessment. ये भी करंट अफेयर्स में था, न्यूज था आज का. अभी रिसेंटली उसको 2020 में चेंज किया गया. they have modified the process of the procedure for obtaining environment impact assessment. Okay, so वो environment protection act में आता है. what are the different sections, क्योंकि prelims में sections भी पूछ सकते हैं. बहुत सारे state services में they will be asking the sections of EPA, किस section में किस बारे में है, punishment के बारे में या किस बारे में बात करता है. Okay, all these things, right? After that you will be studying Biodiversity Act 2002, right? Biodiversity Act 2002 में आप biodiversity का part है. So you will be studying different features. You will be studying like how sharing is done, benefit and access sharing, BAS. Okay, benefit and access sharing, जो भी मतलब traditionals है, जो tribals है, उनके पास जो knowledge है उसको आजकल लूटा जा रहा है. Okay, so that's why this act puts a hold on that. This act prevents the big companies from stealing the knowledge of the locals for making money. And if they are making money, it ensures that equal profit is going to the basic people, right? Okay, who has shared the knowledge. And last one you'll be studying is Forest Rights Act 2006. Forest Rights Act 2006 में क्या होगा? Like you'll be studying the different. ये बहुत important, ये बहुत recent है because it came into act even only in 2008. तो comparatively this is the latest act, right? तो इसको पढ़ोगे. Forest Rights Act क्या है? Who are the beneficiaries? Forest tribes and traditional forest dwellers, उनको क्या क्या rights दिया जाता है? What are the constraints? ये इस बार मैं expect कर रहा हूँ. I'm expecting one question from this. So this will entirely complete your forest legislation. बहुत 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 important है. That's why I have kept it as a separate section. आप इसमें पढ़ोगे 3 policies, कितना acts कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so 7 acts, 7 or 6. So 1 2 3 4 5 6 6. Okay, only 6. So EIA EPA के अंदर है. So there are 6 acts and 4 policies. Okay, so इतना आप पढ़ लिए तो you will not miss any of the questions in prelims as well as mains. एक क्वेश्चन तो मेंस में डेफिनेटली आएगा और 2 क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में आएगा. बी वेरी थिंग, वेरी केयरफुल. सो इसके बाद लास्ट बचा एनवायरमेंटल न्यूज. ओके, सो कहां से पढ़ रहे हो? वेयर आर यू स्टडीइंग द न्यूज फ्रॉम? न्यूज वेयर आर यू कैचिंग? ऑफ कोर्स द न्यूज़पेपर हिंदू. उसके अलावा मैगजीन सर लास्ट टाइम आया था एनवायरमेंट. Yeah, so mostly stick with PIB. PIB में जितने भी एनवायरनमेंट के न्यूज आए तो डोंट लीव इट. ओके, उसको डेफिनेटली पढ़ो. उसके बाद आप चाहे हिंदू में पढ़ रहे हो या मंथली मैगजीन से पढ़ रहे हो या 365 डाइजेस्ट वगैरह आता है ना, उसमें एनवायरनमेंट का अलग सा सेक्शन आता है. देयर विल बी एन एंटायर बुकलेट व्हिच टॉक्स अबाउट एंटायर न्यूज इन एनवायरनमेंट. ओके, सो और अमित सर विल हेल्प यू विद द एनवायरनमेंट पार्ट. उसमें कुछ जो भी न्यूज एनवायरनमेंट का आ रहा है, नो मे बी लाइक स्पीशीज इन न्यूज,
अब जैसे आप किसी भी स्पीशीज को देखोगे, डेफिनेटली सी व्हाट इज देयर IUCN स्टेटस, उसका IUCN स्टेटस क्या है, वेदर ये एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओके, एक्सटिंक्ट इन नेचर है। आजकल चीता रीइंट्रोडक्शन का 2-3 न्यूज आया, ओके, सो दैट मींस यू हैव टू गो बैक टू द प्रोजेक्ट चीता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, उसको पढ़ लेना चाहिए, ओके। सो देयर आर सो मेनी locust attack, okay. So this time I'm actually expecting a question on locust attack, so there might be a thing because recently in lockdown there was this attack. So kya hota hai, what are the different types and other things, right? So then there was something called as polycrack. So polycrack एक waste to energy conversion plant है, वो भी न्यूज में था. Then you had biorocks, then you had black carbon. ये सब न्यूज में आता है, ऐसे टॉपिक्स आता है एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स जिसको आप पढ़ लेना चाहिए, ओके. सो ऑल द एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स शुड बी रेड इन हियर एंड दैट विल एक्चुअली गिव्स यू एन एंटायर इनसाइट, ओके. So changes in environmental impact assessment. So this would give you an entire picture. अभी तक हमने एक भी टॉपिक इकोलॉजी का या बायोडाइवर्सिटी का या डिजास्टर मैनेजमेंट का बात नहीं किया, ओके. वी आर स्टिकिंग विथ ओनली प्योर एनवायरमेंटल साइंसेस, एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक. इसके अंदर ये सब चीजें आएगी. गॉट इट? एंड दिस इज हाउ इट शुड बी डेल्ट. इसको एक बार कर लिया, once you are done with these things, then keep it aside. आप इसको साइड में रखो. You are done with environment. आप इसका टॉपिक्स कुछ नहीं पढ़ोगे. Whatever you are done, you have prepared the notes. उसको you will stick with it and you will keep on revising and you will keep on updating with the current news. So once it is done, next you will go to ecology. Ecology में क्या करना है? Both for for prelims and mains. So initially for prelims, one of the topic of ecology, like factors influencing ecology is very important. इसमें से बहुत सारा deeper aspects तो पूछा जाता है कि इसमें for example like they will be asking you कि light का effect क्या है, okay, which of the light plants absorb. So what is photoperiodism, what of phototropism, राइट? वो सब टर्मिनोलॉजीज जो आता है वो इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर के हिसाब से लाइक विच एनिमल सर्वाइव्स इन दिस एरिया, दैट एरिया, ये सब चीजें फैक्टर्स जो है वो प्रीलिम्स में आता है. मेंस के लिए इट इज गुड इफ यू डू नॉट हैव टाइम, फॉरगेट इट, ओके. डोंट रीड एक्सक्लूसिवली. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, डोंट गो विद इट. सो उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से द वन विच इज इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी. So when you are studying ecology, सबसे दिक्कत यही आता है कि you will not have an organization, you will not have a proper structurization of the entire ecology. तो आप उसको एक बार कर लिया तो ecology is a cakewalk, okay. So ecology को अलग अलग लेवल पे पढ़ा जाता है. Which is the basic level? सबसे lowest unit of ecology कौन सा है? Akshay or Sudha, if you could tell. Which one? So if I give you 4 options, so if there is individual or species or community or population, which one will you choose? Akshay and Sudha? No idea. सबसे आप ecology पढ़ना है तो सबसे basic level कौन सा है? Believe me, this is one of the question in state prelims examination. Any idea, Akshay? Sudha? Community? Okay, what about Sudha? Sir, basic level तो community होगी sir. Okay, so ये choose करेंगे और बहुत सारे लोग ये choose करेंगे, but the thing is right answer is this. It's population. Population. Okay, so the basic unit आप individual level पे नहीं पढ़ सकते हो, species level पे नहीं पढ़ सकते हो. The basic level is population. Okay, बहुत सारे individual मिलके जो group of individuals से
सेम स्पीशीज के वो पॉपुलेशन होता है. ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम्युनिटी होता है. ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इकोसिस्टम्स होता है. ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स बायोम्स होता है. और ग्रुप ऑफ बायोम्स बायोस्फीयर होता है. This is the least lowest level of ecological study. This is the highest level of ecological study, right? So आप एक एक लेवल को लेके पढ़ोगे और यहाँ आपका ecology खत्म, right? This is how you have to approach concepts में. सबसे पहले population लोगे. Population में आप study करोगे. There was a question in 2013 जिसमें आपको ये picture दिया हुआ था, right? So ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, then like there was something like this. ये चार, तीन करके चार, चौथी में there was a question mark and they have asked you which, identify the next picture. आप previous year questions आप workout किए हो, तो you can see this picture. Okay, you can see this question. तो this is from population ecology. वो लोग सिर्फ pictures से question पूछते हैं. Population trend क्या है? Okay, population groups क्या है? What are the factors like increasing in population increment, population decline? Okay, so factors which lead to population decline, population stabilization. उसमें आता है आपका carrying capacity. Have you seen the mains question of 2019? The question was asked on the carrying capacity. उसमें क्वेश्चन था ना एक, there was a question on carrying capacity. So this carrying capacity is a concept of population ecology. Population ecology में आप concept जैसे गिर फॉरेस्ट में लायन का carrying capacity overshoot हो गया है, जैसे ही there are many places where carrying capacity is one which leads to population stabilization. ऐसे concepts पूरा population का concepts पढ़ोगे. Then you'll go to community. So community में you'll be there are many things which comes in prelims. Interspecific interactions. आप लोग पढ़े होंगे कि symbiosis or amensalism, commensalism, predatorism, parasitism, neutralism. Okay, symbiosis में आप coral reef का देख सकते हो, वहाँ zooxanthellae और coral polyps वो लोग साथ में रहता है. one will cook the food for it, another give the space. दोनों एक दूसरे को help कर रहा है. That symbiosis. Okay, so amensalism हो गया, एक benefit हो रहा है, एक neutral है. Commensalism हो गया, या competition में दोनों negative आता है, दोनों को नुकसान होता है. ऐसा बहुत सारे interspecific interactions है जिसमें prelims में बहुत सारा questions आएगा, right? So that will be one thing. And after that you will be studying ecotones concepts. Ecotones क्या होता है, उसका examples क्या होता है. So then edge effect क्या होता है, keystone species क्या होता है, right? And niche क्या होता है, right? So economic guild क्या होता है, economic equivalents क्या होता है. So these are all concepts. Exactly आपको समझना होगा कि क्या है और उसके ऊपर questions आता है. There was a question on economical equivalents. Okay, बहुत पहले they have asked if two animals which are functioning the same role in two different terms, they are called as, चार words दिया था, one word which was economic equivalent. ऐसे concepts जानना जरूरी है, prelims में ऐसा questions आ जाता है, right? So once you are done with all the community ecosystems, then go to ecosystem ecology. Ecosystem ecology में आप food chain पढ़ोगे, then food web पढ़ोगे. Okay, उसके बाद you will be studying ecological pyramids. Ecological pyramids, pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. So कौन सा क्या होता है examples के साथ, क्योंकि यहाँ से भी prelims में बहुत सारा questions आता है, right? So उसके बाद आप पढ़ोगे succession. Okay, plant succession, primary succession, secondary succession. ये 2017 या 18 का एक question था. Okay, ecological succession के बारे में पूछा गया था. So after that you will be studying biomes, different biomes. ये आप environment में geography में जो पढ़ोगे ना, so if you have studied that, this will be very easy. So कौन सा biomes है, कितना biomes है, you have this tundra biome, taiga biome, boreal forest जिसको बोलते हैं, so you have Mediterranean biome, chaparral. ये सब चीजें आप geography में भी पढ़ोगे, the regional classification of world geography.
सो वहां भी बहुत सारा रिपीटेशंस है. आप उसका एनुअल टेम्परेचर जानना है, रेनफॉल जानना है, कौन सा स्पीशीज रहता है, कौन सा प्लांट्स, कौन सा एनिमल्स रहता है. इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है. 2011 to 16 एक 17 एक type of question definitely आता था कि they would give the situation. So in this place the mean annual temperature will be like this. So in this place the animals, mostly these animals are found like prairie dogs. So the tribals which are found are mostly like these people. So which of the area is this? They'll ask you whether it's a Mediterranean, whether it is savanna, whether it is tundra, or whether it is desert type. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारा आता था जियोग्राफी में. So that can be tackled with this. Okay, so they will be studying different biomes and what are the details of that. Then biosphere, what is biosphere, like what are the values, how it works. इसके अंदर आप cycles पढ़ोगे, biogeochemical cycles. So you'll be studying nitrogen cycle, sulfur cycle, carbon cycle, oxygen cycle and all these things. तो इसके साथ आपका पूरा ecology खत्म. इसके अलावा ecology में कोई topic बचा नहीं. So nothing will come outside this topic. If you are done with ecology with this strategy, ऐसा बना के आप ecology का notes prepare करोगे, तो then you will definitely leave nothing. किसी भी question पूछे ecology के अंदर आप answer कर सकते हो. All right. So that is what is done in ecology. So moving ahead, we are left with biodiversity. Biodiversity is a very small topic. ज़्यादा नहीं है, पर अलग रखना जरूरी है क्योंकि it will mix up with some of the topics of ecology and environment, and later on you will suffer with confusion, right? इसीलिए इसको बाहर रखना जरूरी है, भला ही वो छोटा टॉपिक क्यों ना हो. So biodiversity क्या है, हमारा biodiversity status क्या है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन देखा था मैंने एक स्टेट सर्विस एग्जाम में कि दे हैड गिवन अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी. सो जैसे कि प्लांट्स हो गया, सो एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ओके, वायरस हो गया. आजकल वायरस का सब बहुत चल रहा है ना, दे माइट आस्क यू. सो आप कौन सा नंबर्स दोगे, प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड वायरस, सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें? Which of the one is having the highest number of diversity? What do you think, Akshay? What do you think, Sudha? So I think Plants. Okay, Sudha says plants. Akshay? insects. Yeah, you are right. Insects is the first one. So there are around 7,40,000 species of insects. Plants तो सिर्फ 3 लाख है, और animals थोड़ा कम, around 2,80,000, right? So viruses are only 1,100 species. अभी इतना ही है, okay, including corona. So right, they might ask you to arrange in the increasing or decreasing order कितना biodiversity है. So what is the value of biodiversity? क्या क्या देता है? This could be a direct question in mains. So what is the value of biodiversity? And after this, you'll be studying directly going to biodiversity hotspots. कितना है इंडिया में? How many of them are there? So I think 17. Biodiversity hotspots India में? 4 sir. Only 4. Okay. So there are 4 out of 36 biodiversity hotspots all over the world. So who finds it? Conservation International. Okay. So there is an organization which identifies Norman Mayer's के concept में. So you should know what are these 4. Okay. The Himalayas, Indo-Burma, Western Ghats, and Sundaland. Okay. So individually you have to study Himalayas में कौन कौन सा species है, कौन कौन सा plants है, कौन कौन सा varieties है, और कौन कौन सा plant species, tree species, tree lines के above कौन सा है, tree line के below कौन सा है. Okay. So ये सब चीजें पूरा हिमालयस के बारे में यहाँ पढ़ोगे. इंडो बर्मा रीजन, वहां पे आप नॉर्थ ईस्ट के जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग स्पीशीज जो मिलता है, which are endemic. Okay. This talks about 2 things. One is endemism and another one is threat. जो सिर्फ 1500 प्लांट स्पीशीज से ऊपर एंडेमिक स्पीशीज हो या 70% ऑलरेडी डैमेज हो चुका हो, वो 2 क्राइटेरिया लेके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिसाइड करते हैं. So Indo-Burma and Western Ghats, when you study Western Ghats, you should definitely study what is the diversity of Western Ghats, species found in Western Ghats, Gadgil Committee का रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन का रिपोर्ट,
राइट. सो ये सब मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक से, वेस्टर्न घाट्स के टॉपिक से. देन सुंडालैंड. सुंडालैंड में हमारा निकोबार का एक छोटा सा पार्ट है जो विच फॉल्स अंडर सुंडालैंड. बाकी बहुत सारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां का इंडिविजुअल यूनिक स्पीशीज कौन सा है. से क्योंकि इफ यू स्टडी दिस यू विल बी स्टडीइंग अबाउट डुगोंग, यू विल बी स्टडीइंग अबाउट फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल. ये सब प्रीलिम्स में आ चुका है. You know, all these questions have come where you'll be studying the diversity of Western Ghats. Okay, so with this biodiversity will be done. What are we doing to conserve the biodiversity? इसके अंदर एक एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट. सो आप उधर ही पढ़ लोगे, बट द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज अर्थ समिट का जो UNFCCC है, आप क्लाइमेट चेंज के अंदर पढ़ोगे, पर इसके अंदर UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको आप इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा. सो व्हाट इज द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, उसको पढ़ोगे तो बायोडाइवर्सिटी इज डन. सो लेटर ऑन वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन थिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट. इसके अंदर आप इसका बेसिक्स तो आप पढ़ ही लोगे. व्हाट इज अर्थक्वेक, हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाट इज एपिसेंटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स एंड ऑल. नाउ इफ अर्थक्वेक कम्स, what are the strategy you have to follow, what is the disaster management. क्योंकि communication lost हो जाता है, transportation lost हो जाता है, how will you actually mitigate it. Okay, how will you as a civil servant, how are you going to address it, or what are the things you would do, what is the preparedness you should be there if you are in a earthquake prone area. वो सब चीजें करना है. You should do it for earthquake, you should do it for tsunamis, you should do it for landslides, for forest fires. Okay, so for avalanches. So all these disasters जो आप जियोग्राफी में बेसिक्स पढ़ते हो, उसका डिजास्टर का मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पढ़ते हो. इट्स अ वेरी टाइनी थिंग, पर इसको भी सेपरेट रखो. आप किसी तीन के अंदर इसको घुसा दोगे तो इट विल अगेन क्रिएट प्रॉब्लम्स. सो दिस इज द फोर्थ पिलर, 4 things you should concentrate, and this is how you have to prepare for both for prelims and mains with respect to environment, right? So समझ में आ गया? Is there any questions from here? I'll quickly be थोड़ा लंबा खींच गया. I'll quickly be moving to science and technology. तो इसमें कुछ problem है? Do you have any questions here? Anything like which you want to ask कि कैसे prepare करना and other things? Regarding this management thing. Yes. So the similar framework can be used in most of the questions, like sir the early warning system. Exactly. ये सब हर disaster को suit होता है. Okay, every disaster early warning system mapping is the same thing. Mapping तो आपको करना ही पड़ेगा. Then only you will come to know whether it's a prone area or not. Early warning systems देना पड़ेगा. Awareness is a common thing where you can use it for everything. But there are community partnership. Exactly. Okay, so public awareness, broadcasting वगैरह, providing food, shelter, instant satellite communications. So ये सब चीजें सभी को होता है, पर कुछ है जो specific है. Okay, so tsunami आया तो you should be looking for evacuation of the residents to different areas, food management वगैरह and other things, right? So you should not go inside the house because electricity might be roaming around. So certain dangerous snakes would be there inside the house. So you shouldn't step inside the house. If there is gas, then what you have to do. There are some minor things for each and everything. ये जो common strategy है उसको लिखने के बाद आप वो लिख दो. Okay. But there are questions, आता है disaster management से there will be questions. Okay. So that is how you have to study this. Right. So एक picture मिल गया. Did you got an entire picture of how to prepare for environment, ecology, biodiversity or disaster management? Yes. Yes, sir. Any questions? Sudha? No, sir. Okay. So once you are done with that, we'll move on to the next thing, how to approach science and technology. Okay, science and technology बहुत सारे लोगों के लिए things that's too much of complication. But please note that when you are preparing for science and technology, the thing is you should know that science and technology is entirely different from something called as general science.
दोनों मिक्स कर लेते हैं. Okay, you will always mix the things between science and technology and general science. When you say general science, you will always be talking about physics, chemistry, and biology. So biology में वही the basic things, you know, what is botany, zoology. Botany के अंदर morphology of flowers, anatomy of the flowers. So the you know, breeding, genetics, basic genetics, Mendelian genetics. So breeding techniques, basics. Okay. So all these you know, phyla of plant kingdom, fighting kingdom, classification of Whitaker. वहाँ पे आप zoology, botany पढ़ोगे. When you are studying zoology, different kinds of diseases, human diseases, different circulatory system, respiratory system, excretory system, ये सब biology के अंदर आएगा. Chemistry आप पढ़ोगे तो इसके अंदर acids, bases, right? So you'll be talking about solutions, you'll be talking about metals, non-metals, soft metal कौन सा है, okay? So you should know which is the soft metal of the given thing. ऐसे simple question पूछते हैं कभी कभार. So physics में, you know, you should be knowing motion, laws of motion, then different kinds of you know, energy, heat, right? So ये अलग सा एक section है जो general science बोला जाता है. It will not be included under science and technology. Please know that. And it comes only in prelims. Mains में कभी कभार आता है. Mains में mainly what comes is science and technology, right? So knowing that, having said that, science and technology should be followed in again 3 steps. First thing is the concepts, right? Basic aspects, or you can say traditional aspects. So इसमें आप पढ़ोगे what is science and technology. So इसका world scenario क्या है. So what is Indian scenario? Okay, science and technology in India, science and technology in rural India. इसमें क्या क्या technologies अभी तक गया है. Okay, so then you know, contribution of Indians in science and technology, starting from, like, you know, Abdul Kalam ji. So you'll be studying all the major Indians who has contributed a lot, okay, including Sir M. Vishweshwaraya, so including Jagdish Chandra Bose, okay, Satyendranath Bose. Who is Satyendranath Bose? Bose Einstein phenomenon. Question आया था ना एक, you know, Yes, 2018 में, then mains there was a question, Bose Einstein theory का एक summary पूछा था उन्होंने. Okay, people were always confusing कि कहाँ से है, where are they picking the questions from? But this information, if you have studied contribution of science and technology, you know, Indian contribution of Indians in science and technology, the entire Bose Einstein theory is there in your notes. आपके notes में होना चाहिए. last time they asked about Sir Vishweswaraya sir. Exactly, वो उसमें आता है, वो उससे एक एक क्वेश्चन ऐसे ही उठाते हैं. If you do not have this categorization, तो आप फंसोगे. Okay, you will not come to know where the questions are coming from. अगर आपका बेस, आपका नोट स्ट्रांग है, तो you will never miss a question, right? So contribution of Indians in science and technology. उसके बाद हो गया आपका intellectual property rights, IPR. इसमें आता है आपका patents, इसके आता है copyright, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जो न्यूज में होता है ना नया नया. सो कुछ सैडी को जीआई मिल गया, रसगुल्ला को यू नो जीआई मिल गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया, कुछ आंध्र प्रदेश का टॉयज को जीआई मिल गया. ये सब प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है. पिछले बार भी एक क्वेश्चन था जियोग्राफिकल इंडिकेशन से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यू नो डू नॉट हैव अ जीआई टैग, वैसा कुछ था. देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दैट. ओके, जीआई लाइक यू नो इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स. उसके बाद ट्रेड यू नो ट्रेडमार्क्स. ओके, so then you have trade secrets. So all these comes under intellectual property rights. So ये आप पढ़ोगे, ये सब traditional science and technology में हो गया. Then comes the actual technology. Okay, under technology you should start with initially biotechnology. What is biotechnology? क्या है? You know, what is the meaning of biotechnology? उसमें क्या क्या टेक्निक्स है? आपके पास टिश्यू कल्चर है, आपके पास you know DNA फिंगरप्रिंटिंग है, आपके पास you know जीन स्लाइसिंग है, आपके पास CRISPR you know Cas9 वो टूल है.
So using all these, बहुत सारा questions जो CRISPR-Cas9 2018 का question था, that was from here. You will be studying this in biotechnology. It's a DNA cutting, gene editing tool. So उसमें आप basics पढ़ोगे, चाहे तो आप basic from what is a gene, what is a DNA, how, वो सब basics से आप पढ़ सकते हो biotechnology में. If you do not understand direct techniques, okay, you can go to a little basics और वहां से पढ़ोगे तो आप completely biotechnology जान जाओगे. What is the application of biotechnology in industries, what is the application in health sector, or application in transportation, application in general crop improvement, agricultural improvement. इससे questions आता है. Basically there was a question on genetically modified crops. So that was a question which will be included in here. Biotechnology से आता है. Okay. So then comes, after biotechnology, space technology. स्पेस टेक्नोलॉजी में आप इसरो में जाओ. इसरो में आप बेसिकली स्पेस का हिस्ट्री पढ़ो कि व्हाट आर द डिफरेंट सैटेलाइट्स व्हिच हैज बीन डन. सो उसको 3 कैटेगराइजेशन में बांट दो. ओके, पहले लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स. PSLV हो गया, GSLV हो गया, GSLV Mark 3, और अभी जो recently small satellite launchers, SSLs, वो आ रहा है. So all this information you will be getting in the ISRO website. और थोड़ा बहुत space technology का बारे में जान लो. What are the recent ones? हमने रिकॉर्ड किया था 104 satellites भेज दिए थे. Okay, which launch vehicle was there? उस launch vehicle में कितना stages होता है और उसमें क्या क्या fuel है. Whether it's a solid fuel, whether it's a liquid fuel, whether it's a gaseous fuel, कौन सा fuel होता है, कितना stage. PSLV usually 4 stages का होता है, GSLV 3 stages का होता है. Okay, so those basics आप जान लो. Satellite पे आपको अलग अलग categorization satellites मिलेगा. Remote sensing satellites. Okay, so then you will be having okay, something happened. Okay, nothing. Okay, so remote sensing, Earth observatory satellites, communication satellites, then navigation satellites, research satellites. So all these are different kinds of satellites which are available, in India, which are launched. और उसमें recent launches करता कर लो. So then basic information about space science and technology कि mission मंगलयान या Chandrayaan 1, 2, उसमें क्या क्या probes था. All these are things. So that all comes under current events. Okay. उसके बाद आप पढ़ोगे nanotechnology. Okay, so then you will be studying robots and robotics. Okay, so robots and robotics in science and technology. So then you'll be studying information technology. Then you'll be studying computers. Okay, different types of computers. जो stages of evolution है कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या था, वो स्टेज क्या था. then comes the recent ones. So इसमें then moving forward super computer क्या है, Indian super computing program, all the Param series super computers, Param Shivai, Param series. So वो सब चीजें, what is the basics and other things. Then defense technology. Okay, so defense technology, all these nuclear deals, different kinds of nuclear headed weapons. इंडिया में कौन कौन से एयरक्राफ्ट से, कौन कौन सा मिसाइल से. Okay, so all these integrated missile development program जिसमें पटना आता है. Okay, so पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग and Agni. Okay, so all these individually you will be studying. So in the defense technology, different technologies we are having, different innovations we are done. So then current affairs, what are the technology related current affairs? जो जैसे environment के लिए अलग सा एक booklet मिलता है, वो सिर्फ environment के बारे में बात करता है. So there will be something which is available for science and technology. So science and technology के लिए there will be a separate booklet which covers all the science and technology issues related in that year. Okay, उसको आप पढ़ लो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस पे अपडेट कर दो. So or else Amit sir will definitely help you with the current affairs. Okay, so इतना करोगे तो you are done with science and technology,
right? So this is all you have to do, and this is all is the approach both for prelims as well as mains. Prelims के लिए थोड़ा बहुत detail में जाना जरूरी है. So knowing the terminologies, knowing the definitions, and knowing the name of the satellites. And for mains, you have to know the entire thing. You should know the application part. Okay, application of nanotechnology in health sector. Okay, so there you will be writing what is nanotechnology, how it should be done, like kaise work hota hai, it will be done at nanoscale. So in that recently, scientists are working on nano robots. Okay, so आप example के साथ यहाँ से current affairs उठा लो जो nanotechnology का है, like they are called nanobots. Nanobots को आप एक capsule में डाल देते हो, you will be asking the patients to swallow it. Those nanobots goes inside and cleans the valves, artery के अंदर जो blocks होता है because of deposition of cholesterol, उसको वो clear कर देता है. People from outside are operating it. Okay, so that is a combination of, that is the entire answer which you have to give, right? So say for example abhi एक question पूछा था. So this is all about science and technology. So any questions from here? Anything you want to ask me? Akshay or Sudha? No, sir. Okay, so this is the overall thing. This is how you have to answer. And regarding the questions, so Nikhil sir, if you are there, are you still there? Nikhil sir? So see, basically we have a couple of questions which were related to science and technology and environment. Say the first question was Operation Kurma. So rest of the questions were from ecology. So Operation Kurma was a question, what is Operation Kurma and how do you control the man-animal conflict? So that was a question. So how do you approach this initially? So you start with the basic introduction. What is Kurma? Okay, Kurma is a Sanskrit name for turtle, right? That is what turtles are called, Kurma, right? So, and it is mentioned in many ancient literatures. It is mentioned in Yajurveda. It is mentioned in even epics, okay, Puran, in Vishnu Puran. So this is the second avatar of Lord Vishnu, where he has taken the avatar of Kurma in order to give support for the mountain in the ocean of milk. Okay, so that is like, thing, utna likhna nahi hai, but it is there in thing and it has a mythological significance. So that create awareness among the enforcement agencies. So that is a small introduction about Kurma. Then come to Operation Kurma. What is it? It is a species specific operation. Who launched it? Wildlife Crime Control Bureau. Okay, WCCB launched it. So it's a species specific operation to save the turtles, right? What was the period? It was from 15 December 2016 to 30th Jan 2017. This period mein they launched this. This was a operation which was convened during this period. Isme kya hua? Around 15,739 turtles were saved from around 45 suspects. ये हो गया आपका second paragraph where you will be explaining actually what is Project Kurma, right? Sorry, Operation Kurma. So इतना कर दिया. Then along with it there will be second paragraph क्योंकि इतने में आपको पूरा marks नहीं मिलेगा. So you should talk for one more paragraph regarding the same Operation Kurma. Operation Kurma में आप क्या-क्या बताओगे और आप start करोगे. You will talk about what are the other turtle conservation programs running in India. Okay, so there is Turtle Conservation Sanctuary which is been opened in Allahabad. So this has been opened in Allahabad mainly to save the Gangetic reptiles. So this is a big program under Namami Gange project
where there is breeding program, there is saving program, saving it from nets and other things. So there has been initiative from WWF. Okay, it has come up with, World Wildlife Fund has come up with a special kind of net where it will not kill the turtles. Usually one of the reasons why turtle will be killed is because it gets hooked to the fishing hook. Okay, there'll be a special hook which is formed by WWF which saves the thing. Okay, so then you have sites. Sites have mentioned it under the thing. It has banned the illegal trade of turtles. Then you write one line about Wildlife Protection Act 1972. In this, it has kept turtle under Schedule 1, which attracts highest penalty and highest punishment if at all somebody is found guilty of doing trade in turtles. You cannot kill a turtle. It is under Schedule 1 of WPA. Okay, so all these things comes under the second paragraph. Then go to the second part of the question. Man-elephant conflict. Where do you get the base for man-elephant conflict? In this, you can actually talk about the National Forest Policy 2018. Okay, so under National Forest Policy, there has been a guideline. Okay, so in this, there is a specific guideline or chapter which is dedicated only for human-animal conflict. So इसमें क्या होता है, National Forest Policy 2018 में. So there is a thing like there should be quick response, right? Dedicated teams of trained and well-equipped people. So there should be dedicated team of health and veterinary services. There should be speedy assessment of damage. There should be quick payment and relief to the victim. Okay, so monitoring and management of wildlife population. So other than that, you can talk about the common grounds given under WWF. आपको जो इस question में the model answer which he has given, it has all the points कि what are the things in common ground. उसके अलावा आप कुछ लिख सकते हो if you still have time and space. आप word limit पार नहीं किए हो तो you can include wildlife corridors. So wildlife corridors like conservation reserves, okay, and community reserves. In सबसे क्या होता है? You will be stopping the human-animal conflict, creating awareness, creating training, okay, wildlife camps. So all these will lead to decrease in this. इसके आंसर के साथ आप conclude कर दो. So this is how the question should be answered. This is the structure. This is the format of the question, right? So I say there are couple of questions. I think today we shot down. So मैं सोचा था कि पूरा 2 questions और मतलब पूरा questions और strategy दोनों एक ही दिन discuss कर लो. But I think it's not possible today. तो I will talk to Amit sir and हम लोग 1 और घंटे का session लेंगे. In that I'll not be talking about strategy. I'll be talking only about the questions. आपका जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस पूछा गया था फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बारे में मैं बात करूंगा. उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसका आंसर फॉर्मेट होना क्या चाहिए, व्हाट इज द स्ट्रेटजी व्हिच हैज टू बी फॉलोड एंड वेयर यू हैव टू पिक अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम. सो इज इट ऑलराइट? Okay, sir, no issue. Okay, so Sudha, Akshay, I think there is one more, right? Devendra, right? So this is like we'll wind up here because it's been more than an hour we shot up. So इसके बाद मैं आपको एक और क्लास लूंगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, right? So thank you for being so patient. Was it helpful? Was it informative? कुछ मिला आज के क्लास से? Yes, sir. Hopefully. I had not prepared these various acts which you mentioned.
that I Yeah. will not prepare, sir. Okay, good. So please prepare. यही strategy है, इसी से clear आता है, इसी से rank 1 भी आ सकता है. So there is nothing else. So prepare this और इसके अंदर हो जाएगा. You know, you should be able to, you know, go with this. You know, you should be able to clear your exams and answer all the questions which comes in environment and ecology, biodiversity, science and technology with this much of knowledge. तो इतना करके जाओ. If you have any doubts, please ping Amit sir. So questions है तो मैं next session जब लूँगा, I will also, you know, tackle those questions. You know, I'll come up with the solutions. मैं उसको भी discuss कर लूँगा, right? So that is all I had to offer today. So thank you so much, and see you in the next class. All the best for your exams, right? Thank you. Bye bye. Good night. Nikhil sir, if you are there.